all present, and welcome to the book launch event announced by Clever Fox Publishing. Today, we are here at this graceful evening to launch the book with the title A Man with White Coat. We have with us our main guest of honor, Mr. Lomharsh, who is the author of this book, and also Dr. Sunil Garsa, who is the main hero or the titular hero of this book, on whom this book is being written. Welcome, Mr. Lomharsh, and welcome, Dr. Sunil. Thank you. Thank you. So, about the book, uh, basically, we'll just start off with the introduction of the guest right now. So, firstly, Mr. Lomharsh, I want to speak about. He is an Indo-Australian writer and director currently working in Bollywood. And his debut feature, Ye Hai India, is won the Best Director and Best Movie Award, along with Best Rag Inspired Song of the Year at Radio Mirchi Music Awards 2020. He has also made two short films titled Chicken Biryani and Chicken Biryani 2, based on the theme of Indian Army and humanity. Also, he has received around 28 awards and laurels for his work and also been awarded as the Youth Ambassador for Peace by UPF and UN at Parliament of India on 3rd November 2018. That is, I would say, a very vast, wide range of achievements that a person No, could no, have no, done. no. It's No, just in beginning. आप अभी डॉक्टर साहब का पढ़ेंगे तो मेरे वाले कम है उसके आगे. of course, sir. So I would say, being an author, director, and achieving so many things, I would say it's a wonderful job. So we are honored to have you on this panel, sir. Thank you very Also, I much. would like to talk about Dr. Sunil Kumar Gasa, who is the main titular role of this book, who the book is focused upon and the story revolves around. He is he pursued his MBBS from SMS Medical Jaipur, Rajasthan, MD Medicine from RNT Medical College, Udaipur, and Doctorate in Medicine Cardiology from SGPGI, Lucknow. Dr. Sunil Kumar is a man, the healer, a legend of sorts. He is a force to reckon with when it comes to dealing with cardiology, especially the coronary procedure through radial route. So basically, we all know that doctors are considered as gods among us because may any the problem come, any disease, they have always a cure for it. They come out with various types of procedures, medications, and everything to fight whatever is the cause of any kind of disease. Currently, we have seen from the past 2 years, there has been a global pandemic called as COVID 19, on which many of the doctors, many of the scientists have worked on, and they have tried their best to keep people at their best health. Moving forward, we would like to have a small video trailer of the book, so which gives us an idea what this book is about. So here is a video trailer of the book, A Man with White Coat.
Well, that sounded like an amazing trailer, compiling all of the struggles that people go through to achieve something in their life. And I'm sure Dr. Sunil Garsa would correlate with a lot because it totally revolves around the story of his life. And it is obviously compiled into a story by Mr. Lom Harsh. So I would want to ask Dr. Sunil Garsa to share his life in a few words with us for all the audience here. I think first long should speak, long verse. That Okay. will be better thing. Sure. So we'll go to the man with the spotlight right now. I would like Mr. Lom Harsh to introduce his book to the audience and, Yeah, give us a I little. think I should become now I should become the host. I take the position of a host Definitely, along with the definitely. guest. You can steal the show right now from here. Yeah, so in one word, see, as a filmmaker, I basically focus on the realistic stories, whether it is my cinema and doctors, it's always in point of question and concern whenever we look around, because nowadays everything is on mobile. We are in bathroom, we are on mobile, we are traveling, we are on mobile. So pretty much mobile is everywhere in our life. It has become the integral part of Definitely. our life, and it has both the benefit, advantage and disadvantage of it. So I think nowadays the way this medical system has been portrayed, and it people rarely have an insight view of exactly what a doctor goes through. Like, just to give you an idea, Definitely. to become an DM, like, there are three streams of medicine and highest galore is DM. So to become an DM, you need 13 to 15 years of your life, Definitely. There is a lot of time which that is one has after to entering, which is invest. after clearing the examination, 13 to 15. So most probably, most of the doctors who went to the journey of DM, they will be 33, 35. मतलब वो Yeah, लोग पढ़ने में ही, द आर्ट ऑफ सेविंग लाइफ को सीखने में ही वो अपनी आधी जिंदगी निकाल देते हैं. definitely. Yeah, I तो would agree on that. एक चीज तो क्लियर है जो मेरे को लगी, वो ये थी कि कि देखो, क्या होता है, दो चीजें होती है. मोस्टली द पीपल हु आर करप्टेड, मोस्टली द पीपल हु आर थीव्स, मोस्ट मतलब डॉक्टर्स के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं ना आज की, भाई ये लोग पैसा कमाते Yeah, खाते हैं, करते हैं, वो करते हैं. तो बॉस, ये शॉर्टकट्स जो होते हैं ना लाइफ के, ये शॉर्टकट्स हमेशा वो लोग अपनाते हैं जिंदगी के अंदर जिनके पास पेशेंस नहीं होता. मतलब अगर मैं ये बोलूं कि एक definitely. चोर कौन Yeah, है, एक चोर वो होता है जिसको कमाई करके, पैसा कमाने का जिसके अंदर नहीं होता, वो चोरी करता है. तो अगर एक डॉक्टर अपनी definitely. जिंदगी, आधी जिंदगी उस प्रोफेशन को सीखने में लगा देता है, तो वो चोर नहीं हो सकता. मेरी फिलॉसफी तो ये बोलती है. And when we Right. started on this journey, and when I came to know about Dr. Saab's struggle, what he went through, he belongs to a farmer family, जहाँ पे choices are very limited. And my favorite part from the book is when Dr. Saab is in 12th standard, when he cleared his 12th, फादर की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि आई डोंट हैव बैग फुल ऑफ मनी कि आप अपने कंपटीशन एग्जाम देते रहो. तो ही हैज बीन Right, right. गिवन जस्ट वन चांस कि भाई तेरे पास एक मौका है अपने आप को प्रूव करने के लिए. एंड ही वाज सो अफ्रेड दैट ही एट दैट टाइम इन्होंने एनडीए, पीएमटी और इंजीनियरिंग तीनों के एग्जाम दे डाले कि भाई मेरा एक मौका है, तो यार मेरे को वापस तो जाना नहीं है. एंड टू द Right. सरप्राइज ही क्रैक्ड ऑल थ्री. तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. सो एक Yeah, definitely we डॉक्टर all can के agree on ऊपर उंगली उठाने से पहले मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि कोई भी हो हमारी सोसाइटी में, इस नोबल प्रोफेशन की लोगों में समझ ही नहीं है. सो दिस that. बुक Definitely. इज एन पर्पस टू एक्चुअली एनलाइट द साइड ऑफ द सोसाइटी, वेयर लोगों को पता चले कि डॉक्टर भी इंसान है. भगवान हमने बनाया. देखो, ये लोग डिग्री ना डॉक्टर की लेके आते हैं, ये लोग भगवान बनने की डिग्री नहीं लेके आते हैं. तो इनको भगवान Definitely. बनाने वाले हम लोग. मतलब डॉक्टर की हालत पता है कैसी है कि एक इंसान मंदिर के अंदर जाता है और रोज शाम को और घंटी बजाता है, बोलता है भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देना, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देना. वो 5 साल तक लगातार जाता है और उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो एक दिन वो है ना, इंसान भगवान को एक्यूज कर देता है, अरे काय का भगवान है मानता तो है.
definitely. Yeah, तो we डॉक्टर्स have seen को कोई क्यों reality. स्पेयर करेगा जब रियल गॉड्स को इस दुनिया ने स्पेयर नहीं किया? आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। और एज अब होस्ट बन चुका हूं मैं, तो अब एज ए होस्ट मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि सर आप बताएं कि मतलब कि इतना पेशेंस कहाँ से आता है? मतलब जो मैं हमेशा आपसे सीखता हूँ वो ये है कि 15 साल बहुत बड़ा टाइम होता है किसी प्रोफेशन को देना, जिसमें मतलब आप उस 15 साल तक तो कमाने की सोच भी नहीं सकते। आपको सीखना ही सीखना है, सीखना ही सीखना है। और सर एक इतने पुअर बैकग्राउंड से आते हुए लोगों को ये होता है कि एमबीबीएस बनते ही हम कमाने लग जाएं, बट आपने उस 6 साल की जर्नी को खींच के 15 साल कर दिया। तो सर वो इतना पेशेंस और वो एंड्योरेंस कहाँ से आता है आपके अंदर, उसका सीक्रेट बताइए। Yes, definitely. We would want to know how Dr. Sunil sir got the patience to handle his patients. Basically, when one does his MBBS, so then next target is further specialization, like doing MD or MS, medicine or surgery. And when I did my MD in 2004, that time there was a trend that trend started that we should go for super specialization, like go for PhD in medicine. And exactly, DM is a doctorate in medicine, that is PhD in medicine, How? and separate specialty. So that time was a trend. So after doing MD, and another target is there that we should go for super specialization. And here the things goes stepwise. So sometimes person learns the patience while doing the thing. If you are knowing that MD will take 3 years after doing MBBS, MD will take 3 years, then you have to do work and you have to prepare for the DM. Then 1.5 years may go in between. After then you will get your DM, then DM will take 3 years. So things here are stepwise, and one who want to learn more and more, definitely he can spare, he can do the thing stepwise and gradually, and to calm his eagerness or to calm his appetite for learning. Definitely. So we can agree that people usually think doctor के पास जाओगे तो उनके पास कोई भी चीज का इलाज नहीं है. Like they think that whatever happens, you just go see a doctor, he'll make everything all right. But what makes the doctor capable of handling all those things is a very long journey of struggles and patience and determination and dedication. So all of this contributes to reaching a particular stage where the patients or the normal people, like common people like us, feel that whatever happens, a doctor can take care of. Usually, the common mentality of what people have is that whatever happens, we just go to a doctor. But if a doctor is by any means not capable of understanding or not diagnosing the particular illness, and they fail to treat, people tend to blame the doctor itself and not the situation. So how would you think that should be seen? Uh, till now, it's not 2000 or before, in 1990. In 2020, we have a reasonable number of specialists, like super specialists in India also. So we should go a specialist of every disease. Earlier, we used to see general practitioner when in case of any problem. So now we can go to a specialist for every disease, and specialists are particularly specific about their treatment. The specialist, if there is not their zone, they will refer to another. Okay, I can't handle this. You should go to this type of doctor. So we have a specialist, first thing. Second thing, you can take second opinion also. If you are not able, you are not recovering, then you can take second opinion from same specialty or maybe another specialty if you are not recovering. So right now, India has reasonable, not sufficient, but yes, reasonable number of specialists. In Western country also, if you see Europe,
Initially, every patient go to internist or physician or general practitioner. Then he refers every patient to a specialist. And this process takes a lot of time. In India, practices are different. Although we have less doctor, but we are serving more people, more patients we are serving per day. So services are more quick in India than European countries. Definitely, But sir, definitely. That was that. after doing all that, sorry, I will interrupt you, Javeri. No, सर, no, sir. तो ये इतना प्रेशर, डॉक्टर्स कम है, पेशेंट्स ज्यादा हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर मतलब हर कोई ये सोचता है कि यार आप लोग मुन्ना भाई हो, बस एक जादू की झप्पी है आपके पास, आप हक करोगे और सब ठीक हो जाएगा। हर कोई इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आता है और आप लोग ठीक नहीं कर पाते, जो कि आप भगवान नहीं हो, आप लोग अपनी बेस्ट देते हो। तो मतलब कि आप कहाँ बोलेंगे कि ऑडियंस की तरफ से जो आ रहे हैं लोग, उनकी तरफ से कहाँ मिस्टेक है? मतलब कि वो आते हैं तब तो अरे डॉक्टर साहब बचा लो, आप भगवान हो, भगवान हो, और फिर जब उनका केस बिगड़ जाता है तो वो डॉक्टर को वही इंसान शैतान डिक्लेयर कर देता है। तो आप तो ऐसे लोगों को दिन रात देखते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या रीजन है जिसकी वजह से एक डॉक्टर को मतलब जरूरत पड़ने पे हाथ जोड़ने वाला इंसान उसकी कॉलर तक पहुंच जाता है? क्या चीज उसको फोर्स करती होगी ये करने के लिए? डेफिनेटली जो क्या होता है कि बीमारी के बारे में जो अवेयरनेस है, बीमारी की जो समझ है, वो इंडिया में नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, अगर झाड़ फूक वाले में 100 में से एक भी ठीक हो गया तो उसकी झाड़ फूक वाले की वो बड़ाई करता है, साहब मैं ठीक हो गया झाड़ फूक से। 99 ये नहीं कहते कि साहब हम मूर्ख बन के आ गए। और डॉक्टर से एक खराब हो जाता है तो कहता है साहब मैंने तो डॉक्टर से इलाज करवाया, ठीक क्यों नहीं हुआ? तो हमारी समझ और हमारी अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर ही ऐसा हो गया है। दूसरा, जैसे मीडिया है, डॉक्टर्स को पॉजिटिव दिखाने वाला लिटरेचर भी नहीं है, कम है। अभी हमारे डॉक्टर्स के ग्रुप में घूमता रहता है कि ये जो डॉक्टर्स के बारे में एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक डॉक्टर्स के बारे में किस तरह से लिखती है, मतलब एक लेखक ने और एडिटर ने कैसे लिखा और एडिटर ने उसको एडिट करके बुक में कैसे दे दिया। एनसीईआरटी की बुक तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन उसका पेज हमारे बीच में घूमता है। तो जनरल जो पोर्ट्रे करते हैं डॉक्टर्स को, मीडिया है, पॉलिटिशियन है। अभी राजस्थान का जो हंगामा हुआ था, अब भाई अगर योजना में गड़बड़ी है तो डॉक्टर्स के का क्या मतलब है? डॉक्टर्स ने तो योजना बनाई नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स ने से तो आपने पूछा भी नहीं है। डॉक्टर्स ने बोला कि यार हमारे इनपुट ले लो, मैं खुद गया हूं कि यार हमारे इनपुट ले लो, योजना बना रहे हो तो आप गवर्नमेंट की योजना बना रहे हो, हमारे इनपुट भी ले लो, लेकिन कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा उस इनपुट को। तो जनरल चीजें ऐसी हैं। और फिर डॉक्टर के पास पावर नहीं है, आप पुलिस वाले के हाथ लगाओगे तो पकड़ के अंदर डाल देगा। और डॉक्टर क्या है कि अब वो काम करते करते धैर्य आ गया, अपना नॉलेज यूज करता है, और फिर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके पास पावर तो है नहीं, ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी है वो, ना ही वो पुलिस वाला है कि पकड़ के अंदर डाल, ना वो मीडिया वाला है कि वो जो है वो सामने वाले को मीडिया में उछाल दे कि साहब इसने मेरे साथ गड़बड़ की है। और आजकल सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत यूज हो रहा है डॉक्टर्स में, तो उसका बेनिफिट भी धीरे धीरे आएगा। हालांकि सोशल मीडिया का पहले नेगेटिव यूज ज्यादा हुआ था कि अचानक से कोई चीज होती है, वो गए आप और आपने वीडियो बना दिया उल्टा सीधा कि साहब डॉक्टर ने ये कर दिया और आपने डाल दिया। बट धीरे धीरे पॉजिटिव वीडियो भी आ रहे हैं कि साहब एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब आप यूरोप की वही देखोगे तो यूरोप में एक बार पेशेंट अगर बीमार होता है और हॉस्पिटल जाता है तो वो वहां कंफर्टेबल है। यहाँ पे बीमार है, वो बीमारी शुरू हुई है, उसको 4 दिन हो गए, 4 दिन हॉस्पिटल में नहीं आया, लेकिन वहां वो दिखाने में डॉक्टर को कुछ घंटे का इंतजार नहीं कर सकता कि मैं अब तो हॉस्पिटल आ गया हूं, मैं मेरे को देखो फटाफट। तो यहाँ पे लोगों का जो सोचने का तरीका और एटीट्यूड है वो अलग है इंडिया के। जहां तक हर आदमी के शुरू होने की, सही होने की बात है, लोग मर्स ये कह रहे थे कि भाई डॉक्टर तो है, भगवान तो है नहीं। मैं कह रहा हूँ भगवान भी 100% किसको सही करता? भगवान ने तो निश्चित कर रखा है कोई नहीं जिंदा रहेगा। भगवान ने तो पैदा कर दिया कि तुम तो मरने ही हो एक दिन। डॉक्टर तो चलो फिर भी एक बार आता है, ठीक करके भेज देता है 6 मंथ। हाँ, तो ये दूसरा क्या होता है, हर आदमी का शरीर एज के हिसाब से, साथ की डिजीज और जो डिजीज होती है जैसे डायबिटिक है, किडनी डिजीज है, मेडिसिन का इफेक्ट भी बहुत वेरिएबल, आदमी की इमोशनल स्टेटस है, वेरिएबल इफेक्ट होते हैं आदमी का। हर मेडिसिन का वेरिएबल इफेक्ट होता है कि मेडिसिन कितना इफेक्ट करेगी, हर आदमी में वेरी करता है। किसी आदमी में वो जबरदस्त इफेक्ट करती है और किसी आदमी में वो पता चला कि आप मेडिसिन दिए जा रहे हो, असर ही नहीं हो रहा है, और डिजीज सेम है, डायग्नोसिस सेम है, रिपोर्ट्स भी सेम है।
तो मेडिकल साइंस ये मशीन नहीं है कि आपने मशीन को रोका, पार्ट बदल दिया और वापस ठीक हो गई। ये आपको चलती मशीन में क्या रिपेयर हो सकता है, क्या ठीक हो सकता है, आप उतना ही कर सकते हो। आप उसके अंदर घुस के उसको ठीक नहीं कर सकते। ये मॉलिक्यूल्स का मामला है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है जिनको हम देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स का मामला है। तो इसलिए रिजल्ट सेम आते ही नहीं है। Right. So, Mr. Lomharsh, if we could, launch the book, because that's the main event of this uh, evening. So, without any further ado, we'll just, I'm a display the guest now. book to You the are the world. host. Yes, go ahead with that. I'm just your host. Yes. So, I think you might have your copy, so we can introduce the book to the Yeah. audience. Copy them. So, yes, we have the book here with us. I think, yeah, yes. So we have the आपको book आपके here with हाँ us आगे लाना on the पड़ेगा, थोड़ा सा whiteboard. फेस के आगे लाना पड़ेगा। आपका ग्रीन स्क्रीन है ना आपको। Yeah. So there's a slight issue, but कोई नहीं, the author नहीं, himself हम is संभाल लेंगे, introducing, हम so संभाल that लेंगे। should be the हमारे वाली most. दिख रही है, डॉक्टर साहब वाली सबसे ज्यादा क्लियर दिख रही है। सर स्क्रीन के पास में ले आओ, आप वाली ज्यादा बेटर दिख रही है। Yeah, एग्जैक्टली, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है आप वाले पे, definitely. नहीं सर, सामने वाली So लाइट ज्यादा I आ ये रही है। पीछे हमने बदमाशी करी है। ये पीछे आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन स्क्रीन है। आप नेचुरल बैठो, हाँ। हमने बदमाशी करी है, इसलिए हमारी चोरी पकड़ी गई। No, I think it's a good thing that the two important people, associated with the book are introducing it to the world. हमारा तो क्या है, हम इस लॉन्च को बस अपने तरफ नो से नो, कर रहे हैं, बट आई वुड से सी देखो बॉस, सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि आई एम नॉट एन ऑथर, यू टू अंडरस्टैंड, राइट? आई एम अ फिल्म मेकर। तो डेफिनेटली मैंने लिखी इसलिए नहीं बोल रहा, बट माई जर्नी टू राइट दिस बुक, मतलब आप ध्यान से सुनिएगा, माई जर्नी टू राइट दिस बुक वॉज वंडरफुल। डेफिनेटली I got to know about the insights of medical profession, the hardship of a doctor, the mentality of a doctor, family pressure, work pressure, social pressure. I came to know about lots of things. So this book is basically associated not just with the doctor sahab, but it is the story of every doctor, I would say, and everyone will feel connected. And if you really love reading books, if you really love something it's inspiring, so it's not a book which tells the journey of a doctor. This is a book of a man who belongs to a poor family, and it's a story of ragas to riches. It's a book which will give you motivation, that how to do, what to do, and even though in the bad phase of your life, how to recover yourself. So this book is basically bundle of 8 different fiction genres of any book lover. तो आपको 7 से 5 8 फ्लेवर इस बुक के अंदर मिलेंगे, and if you really love reading book, I think one should go for it. Right. So we have a few questions for you, sir, if you don't mind. Just like a rapid fire, 3 to 4 questions. Yes. Because you are in the limelight, we want to know your views about a few things. Firstly, what compelled you to write the book when nowadays people prefer movies, OTT platform, web series, all these kinds of things? Being a director, you should know these things. So what is your view about it? It's made very you? simple. People up to the age of 40, they are much more into cinema, क्योंकि जिंदगी के अंदर क्या होता है, इन लोगों में हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा होती है। मतलब पैसा जल्दी से Yeah. कमाना, फैमिली सेटल करना, बच्चों का फ्यूचर, इनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। तो 40 साल तक के जो लोग होते हैं ना, उनको सिनेमा भी चाहिए, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, 5 मिनट की स्टोरी, 1 मिनट की स्टोरी। और 40-45 के बाद में आई थिंक इंसान थोड़ा सा अपनी लाइफ में सेटल हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द बुक रीडर्स, यू विल फाउंड डिसेंट बुक रीडर्स, दे आर अबव 40, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, उनको पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ पता चल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि सिनेमा अपनी जगह है, बुक लवर्स अपनी जगह है। बुक लवर्स का भी एक बहुत बड़ी लॉबी है, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। और जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप सरप्राइज होंगे, आई एम वेरी बैड एट रीडिंग। मतलब अगर आप मेरे को बोलो कि ये बुक पढ़नी है, मैं रिसर्च में पूरी पढ़ चुका हूं, इसलिए मेरे को पता है। क्यों? बिकॉज आई एम 35, आई हैव टू मेनी थिंग्स गोइंग इन माई हेड। बट आई थिंक एक इंसान, अगर कोई भी आपको अपनी जिंदगी में एक ऐसा इंसान मिले जो बुक लवर है,
I think he is the most reliable and trustworthy. So any people who love reading books, I see them as a most reliable and trustworthy people. Right. Definitely. So, being a director, I want to ask you this question. What do you consider to be the most hardest, composing a book or directing a film? Out of these, which would you say would be the harder part? Composing a book, or I think making a film, directing a film. Okay. Because see, Then, we have a pre-production stage in filmmaking जिसमें हम script writing करते हैं. तो हमारा script writing जी, जो है वो 30% of the entire process of filmmaking है, और 70% जो right. process है वो उसको shoot करके post production complete करके release करना. तो anyways it's Definitely. 30%, right? So compiling a book together is my 30% part, which is anyways doing in my Right. life. But making So a it's film is like, altogether a different thing. You cannot compare कि एक book writer एक film director से ज्यादा मेहनत करता है. Sorry, हमारा बैंड बज जाता right, है. right. No, I would agree on this because any movie needs a script also. So writing a book is equal to the preparation of the script for the movie. So I would totally agree with you. So yeah, this question might be a bit weird for you, but what is your writing kryptonite? जैसे हर हीरो के पास एक वीकनेस होती है. You know, we know that kryptonite is Superman's weakness. So what is your kryptonite, you would say? I'm explorer. I think I want to keep learning. I want to explore. ये होता है तो क्यों होता है? So I'm a Right, person who sees beyond the wall, and I think that what pushes me always to go beyond. और मेरा क्रिप्टोनियम वही है कि मेरे को वो जो खुजली है ना जानने की, वो मेरे को मेरा फ्यूल है, वो मेरे right, को पुश करती रहती है. right. Okay, so since we have a few minutes left, we'll focus towards a few of the audience questions, or the It's a book based on medical profession, so we don't want any mistakes in it. Because see, fiction एक अलग चीज होती है. My last book was fiction. Fiction के अंदर you right, have a freedom, but this is a biopic. So बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी क्रॉस चेकिंग होती है. डॉक्टर साहब ने अगर मेरे को कुछ बोला तो वो मैंने इनके फादर से क्रॉस right, चेक किया. तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब ने जो बोला वो मान लिया गया. हर right. फैक्ट्स को क्रॉस चेक किया गया, अप्रूव किया गया, एंड देन वी पेन इट. Yeah, because we can agree on that because a biography means we are depicting a person's real life into a story, although we are showing it as a particular story instead of actual real life with all the struggles. We're putting it in a story kind of way, but still we want the facts to be in a proper way. So I think we could agree on this that biopic के लिए बहुत सारा research जरूरी होता है. I don't know So whether I have one. your audience is aware or not, but we are in process of making a feature film on the same title. Right, right, right. Please. So that's great news to hear this. I think most of the audience, which is under the bracket of 40 to 45, as you told, they would be very eager to watch this as a movie because they might not have time to read this as a book. So they would expect they can watch this Yes, as a so movie. And book will cover 40 plus category, right, right, and right. youth we are trying to cover through the feature film. Right, because nowadays we see every biopic that is released on any famous personality, people enjoy watching that with the person depicting the main hero because it is a source of entertainment, also giving the facts of a person's real life struggles or See, his journey through cinema is a most powerful tool, and right, I was at Facebook headquarters during my first feature film, I remember. So somebody asked me there, define director. right, So my definition of director is that we are the second creators after God. right. देखो डॉक्टर और डायरेक्टर साउंड सिमिलर. तो Definitely. गॉड का जो जान बचाने वाला सेगमेंट है वो डॉक्टर साहब का है. जी, we क्रिएशन can वाला agree जो on that. डिपार्टमेंट है वो हमारा है.
So सी it's like बहुत लोग God. इसको कंसीव नहीं कर पाते, बट मैं आपको बताता हूँ. सी फॉर 2 hours, फॉर 1 minute, फॉर 20 minute हमारे सिनेमा की जो भी ड्यूरेशन होती है, हम डिसाइड Right. करते हैं कौन हंसेगा, कौन रोएगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन कितनी सांसें लेगा. और ये काम किसका होता है? Definitely. भगवान का. तो मैं Definitely. गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा The कि हमारे director को is एक डॉक्टर का वो गॉड गॉड वाला टाइटल हमें दिया जाए. फिल्म मेकर्स definitely, को definitely. स्पेशली एक टाइटल होना चाहिए. डॉक्टर साहब को डॉक्टर अलाउड है ना? Definitely. So directors should be called gods from here on, like God यस Lomharsh. एब्सोल्युटली. यस So साउंड्स गुड. I गॉड totally लोमर्स. agree on it. I would सर definitely agree डीआर की on जगह जीडी ले लेते हैं, जीडी अप्रूव GD, करवाते हैं ना GD. अपन. हाँ ये सही बिल्कुल, जीडी रहेगा. बिल्कुल. लोमर्श. जीडी ये सही रहेगा. प्रदर्शन भी कर सकते हैं इसके लिए आप. सर पर हमारे ऊपर वो ब्लेम नहीं लगेगा. प्रदर्शन कर सकते हो कि साहब हमें गॉड की उपाधि दी जाए. हाँ, ये टॉपिक अच्छा है. ये नेक्स्ट बुक का टॉपिक है एक्चुअली. So you got an idea of your next book within the book See, it's a launch very event, you interesting say. session. Right, right. I think So we covered up I have everything. Is there one. any other audience question you want to cover? Uh, Audience are not posing any questions as of now, but I Not a problem. want to ask you one more question, if you don't Yeah, mind. absolutely. So, being a director, if you would choose one book to, give your version of movie on it, which book would you select to direct as a movie? व्हाइट कोट की तो बन रही है. बर्निंग मैन जो मेरी पहले वाली बुक है वही करेंगे ना. Right, right, आपने तो right. वही सवाल पूछ Uh, लिया मेरे से कि आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करता है, मतलब आप आपका रोल मॉडल या मेंटोर कौन है. जनरली मेरे right, टॉक एंड टेल सेशंस में पूछते हैं मेरे को, तो आई ऑलवेज रिप्लाई right. माई सेल्फ. That Because see, is my journey is some people. ragas to riches. I am not a product of nepotism. Like for example, अगर मैं डॉक्टर साहब को Definitely, ये बोलूं कि सर आपका इंस्पिरेशन कौन है, और अगर ये किसी का नाम लेंगे तो ये गलत है. आई थिंक definitely, इनके definitely. मेंटोर ये खुद है. देखो We कोई would भी agree इंसान that. जिंदगी में जिसकी फाइट उसकी खुद की है. कोई भी इंसान ऐसा जिंदगी में जिसके पास बैकअप नहीं है. कोई भी इंसान ऐसा Yeah, जिंदगी में जिसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है. तो आई थिंक वो खुद definitely, का मेंटोर खुद ही है. definitely. So it's So like, Burning Man, I'm every. planning to convert it into a feature film, which I love to see into a feature film because that was another good book of mine. I got 5 awards, literature award for that. Definitely. So, yeah, one of the audience question is that, to Lom sir, who is your role Same, I model? already So replied. I I think already replied. you already have told that you yourself are the role model for your Before we wind up, there is audience. one very important question which I want to ask Dr. Saab. Definitely, sir. Definitely. Sir, you are traveling in a boat and I think I now know there is what a hole question this and you are would be. going to sink. Okay, one is your dignity, one is your money, and one is your family. Can be anyone, your wife, father, anyone, right? Put them in a sequence कि आप सबसे पहले किसे get rid करोगे, और आपको करना है. There is no. So your dignity, your money, and your family. तो पहली चीज जिसको आप get rid करोगे और जो most valuable है वो सबसे लास्ट तक रहेगी. So dignity, money, and family. I think I will सेव किसको करेंगे सिंक होने से, ये कहना पूछना चाहिए. नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में सेव होगा. तो सबसे पहले आपको एक चीज फेंकनी है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों में. हाँ मनी फेंक दो. मनी. सबसे पहले मनी, फिर उसके Yes. बाद में This is a उसके very बाद rare answer to be में heard. उसके बाद में तो फेंकने के मामले में तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है. बट हाँ, जब फैमिली साथ में है तो आप डिग्निटी को ही फेंक दो, फैमिली को तो बचाओ कौन सा. अरे सर यू मिस्ड इट. आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा? मैं बताता हूँ. सर सेम चीज राजा हरिश्चंद्र के साथ हुई थी. ओके. सबसे पहले उनका पैसा गया था, हाँ फिर उनकी फैमिली और डिग्निटी बची थी, तो उन्होंने फिर फैमिली को छोड़ा. हाँ. आई थिंक सतयुग यू की नीड बात टू है. रीस्टार्ट वर्किंग अगेन
योर डिग्निटी को आप प्रायोरिटी पे लेके आओगे तो आप हरिश्चंद्र बनने के बहुत करीब हो। तो सतयुग की That's a बात है वो, very good explanation सतयुग with की a बात है वो। logic. Very good नहीं सर, approach by एक्चुअली मनी Sir. इज राइट, लाइक ऑफ कोर्स, बट आई थिंक आफ्टर नोइंग यू पर्सनली, व्हाट आई हैव नोन यू सो फॉर, आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रगल, मेरे को हर चीज पता है। आई थिंक यू आर वेरी क्लोज टू गो बियॉन्ड द लेवल ऑफ एक हर इंसान का एक लेवल होता है, जब वो लाइन क्रॉस करता है ना, तो वहां ऊपर जाए बाद अब्दुल कलाम निकलता है, उस ऊपर वाले जोन में महात्मा गांधी है, उस ऊपर वाले जोन में सुभाष चंद्र बोस है, उस ऊपर वाले जोन में भगत सिंह है। आई थिंक उस लाइन को क्रॉस करने में एक छोटा सा गैप बाकी है, वो यही है कि जिस दिन डिग्निटी आपकी प्रायोरिटी हो गई, उस दिन क्या पता छोटा मोटा Right, स्टाम्प टिकट आपके नाम का हम भी देख लें। एम एम जो है, right. खासकर एम अगर प्रायोरिटी हो गई, लक्ष्य से जो एग्जैक्टली। प्रायोरिटी हो गई, तो फिर चीजें, हाँ ये बात तो सही है। नहीं सर, स्वामी विवेकानंद हो गए, गौतम बुद्धा हो गए, मैंने मतलब पढ़ा सबको है, बट आई थिंक ये एक ही चीज है जो उनको ह्यूमैनिटी से ऊपर लेके गई, और वो हम्म यही थी कि लास्ट जो डिसीजन था उनके सामने यही था। सर सबसे लास्ट डिसीजन होता है फैमिली, सबके लिए। हम्म। गौतम बुद्धा की वाइफ ने उनको रोका, पेरेंट्स ने उनको रोका, बट अगर वो उस दिन रुक जाते तो वो हम्म गौतम बुद्धा नहीं बनते और दुनिया को बुद्धिज्म नहीं मिलता। Right, नहीं, कुछ right, right. कुछ क्वेश्चन है शायद वो पढ़ने चाहिए, है ना, कुछ क्वेश्चन हैं। Right, sir. So this question is to Dr. Sunil, sir. One of Ms. Shruti is asking, how did you feel at the time when there was no financial assistance? Like how you kept yourself together towards your goal and dedication? I think what I did in my career, that uh, what money you have, what money you saved or you earned, you start with that only. Okay, you Right, don't keep that money in the bank. You start with that. Whatever you can start with that. Then money will grow. If you will work on it, it will grow. Your business will grow. Money will grow. Then you can start a bigger venture. You can do like और that. अगर हो right. ही ना तो सर, मैं हैं? करना बहुत कुछ चाहता हूं बट पैसा नहीं है, तब क्या होगा? देखो, उससे फॉर फ्यूचर टाइम, अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है तो इन्वेस्ट करने वाले भी हैं, बट ये है कि आपके खुद के पास पैसे नहीं होंगे तब तो बिल्कुल भी कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। खुद कुछ के पास भी खुद हो, खुद के पास भी कुछ हो, और आप ले भी पाओ, अगर आपका आइडिया बिल्कुल नहीं इनोवेटिव नहीं है, सर, आई अलग है। थिंक इस क्वेश्चन की डेप्थ बहुत अच्छी है, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है ना, आई थिंक श्रुति, थैंक यू। क्योंकि इसमें क्या है ना सर कि कहने का मतलब ये कि एक बच्चा है, टैलेंटेड है, हम्म बहुत ज्यादा स्टूडियस है, अपने को पता है वो आईएएस आरएएस बन सकता है, बट उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं है। हम्म तो ऐसे लोगों को मतलब क्या चीज है जो उनको अपनी एम पे बना के रखे, मतलब उनको भी पता है उनको कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा उन पे, उनको भी पता है कोई पैसा नहीं देगा उनको, तो Right. उनको क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है आपको आंसर समझ आ रहा है, क्योंकि आप राइटर आदमी हो, तो आप ही बता दो। He's figuring out the answer, so he's सर able to आप देखो put सर, बताइए। अगर questions. मैं श्योर हूं ना, मैं अगर हाँ। श्योर हूं मॉक टेस्ट के अंदर मेरे पूरे नंबर आ रहे हैं, तो मैं एक किडनी विडनी लंग्स वंग्स बेच के भी रिस्क ले सकता हूँ। नहीं नहीं, एग्जैक्टली, मैं आपको सर एक कोई, चीज बताता हूँ सर कोई इसमें। पैसा नहीं देगा तो करूंगा क्या, यही करना पड़ेगा? मैं मेरा Right. एक्सपीरियंस बताता हूँ कॉलेज टाइम का, 12th करके। अगर किसी को ये लगता है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है, तो उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं कम हैं, उसका सिलेक्शन होगा, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने 12th की थी, तो उस वक्त ये था कि आप बीएससी कर लो जो बायोलॉजी से, या फिर आप मेडिकल कर लो, या आर्मी में चले जाओ। तो मैंने 12th के साथ में एग्जाम दिया था, सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस का। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो सिलेक्शन होगा अगली बार, मुझे भी उस वक्त लगा। फिर मैंने उस वक्त मैथमेटिक्स भी पढ़ी कि आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आर्मी वाली एग्जाम भी दी। थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी दिमाग में होती है कि भाई क्या हो सकता है पता नहीं, तो आदमी एक्स्ट्रा चीजें भी करता है। बट आपको ये लगता है कि आप ये बन सकते हो ना, रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज से भी काम होता है। कल मैं यही सोच रहा था, शाम को खाना खाते वक्त एक आदमी शाम को खाना खाना चाहे तो 100 रुपए में भी खा सकता है, और एक 10,000 रुपए भी खर्च कर सकता है। तो काफी वाइड रेंज है, तो कर सकता है। बाकी खुद कैपेबल हो तो कुछ भी हो सकता है, चीजें लेकिन स्टेप वाइज ही होती हैं।
चीजें एक दिन में नहीं होता कुछ भी चीजें। Right, definitely we can agree on that. That any great achievement needs a lot of time, patience, and dedication. So what we can see in your achievements is the same thing. Also, we can agree on this point that what sir was trying to tell was अगर एक तरफ से कोई दरवाजा बंद होता है तो उसको एंड ना सोचते हुए दूसरे तरफ खोजना चाहिए. Like every person has to try at a new stage instead of ending at one failure. नहीं, सही कर रहे हो Absolutely, बिल्कुल। totally agree. एफर्ट्स करने वाले के लिए मैंने जो, हालांकि जो महापुरुषों के जो अपन बातें सुनते हैं, ये अब शुरू में स्कूल में पढ़ते थे तो वैसे लगता था कि नहीं यार ये अलग तरह के लोग होते हैं महापुरुष लोग। अब धीरे धीरे आगे लगता है ये सारी चीजें वास्तव में सही है। आप जो कुएं में, पहले कुएं में पानी निकालते थे तो रस्सी से पानी निकालते थे कुएं से, तो वहां पत्थर होता था तो वो पत्थर घिसा हुआ रहता था। अब रस्सी सॉफ्ट Right, चीज है, पत्थर हार्ड चीज है, बट रस्सी पत्थर को right, घिस right. देती धीरे धीरे। That's a great example. That's a great हाँ, example. तो चीजें अगर आज जिस आदमी को समझ में आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ, वो उसको कर सकता है। मैं तो यही मानता हूँ। हाँ, फाइनेंशियल की लिमिटेशन होती है, बट आप रिसोर्सेज को या उसी तरह एडजस्ट करो उनको कि आप वो काम कर लो। जी सर, मेरा Right. ये मानना है कि एक चीज है, एक मैजिक है जो काम करता है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, मेरा ये मानना है कि आपको करते रहना है। करते रहना है। मैजिक जरूर हैपन होता है। मतलब मैं इस चीज को ऐसे डिफाइन करूंगा कि मेरी लाइफ में भी ऐसा टाइम आया था कि जब ऐसा लगता है कि यार अब कोई भी रिसोर्स नहीं बचा है। मेरी जिंदगी में Right. जितने भी मैजिकल मोमेंट आए हैं ना सर, वो उनके ठीक पहले का टाइम बहुत डार्क था। और जिस चीज के जस्ट पहले का टाइम डार्क नहीं होता ना, वो ग्रेटनेस की तरफ नहीं जाती। सही तो करो, होता है ऐसे भी आपका होता अगर वक्त बहुत बुरा चल रहा है तो इसका मतलब बहुत अच्छा होने वाला है, और इसका लिविंग एग्जाम्पल मैं हूं। Right. है। सही तो करो आपको बिल्कुल। छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है। वो फेविकोल का एड सुना है ना आपने? Right. बस पानी में वही भी लाइफ लीक। मंत्र है। नहीं, फोकस नहीं हटना चाहिए, फोकस नहीं हटना। Right. Lom sir, we have another question directed towards you. Shruti again says to you, what words of wisdom would you offer to those who are struggling or who aspire to be large? देखो, सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज ग्रेटनेस की स्टार्ट स्ट्रगलिंग से ही होती है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो Yes, इसका I would मतलब agree on शुरुआत that. हो चुकी है। तो सबसे पहले तो Right. बधाई हो कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। यू Right. स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ स्ट्रगलिंग। यस। सो नाउ लार्ज का ऐसा है कि सी दिस इज व्हाट आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज सीक्रेट ऑफ लाइफ जो मैं क्रैक कर चुका हूं। सलमान खान की एक मूवी थी किक, उसका एक डायलॉग था कि मुझे इस किक किक नहीं मिलता। Right. इफ Right. एवरीवन रिमेंबर्स, श्रुति, इफ यू Yeah. हैव सीन अ फिल्म, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अगर आप सिनेमा के अंदर जाओगे ना, जहां आपको बहुत छुपे हुए मैसेज मिलेंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट Right. डिकोडिंग, लाइफ इज लाइक अ कोड। So if you're talking about here, to make it large, to make it big, I think the secret to it is कि मुन्ना भाई के अंदर आपने देखा होगा, संजय दत्त गांधी को पढ़ते पढ़ते उसके नशे में खो गया था। मतलब Yeah. उसको हर जगह गांधी दिखने लग गया था। जब मैंने वो मूवी देखी थी ना, तो मेरे को लगा था व्हाट इज दिस रिडिकुलसनेस। Right. बट Right. आज मेरे को लगता है कि यार ये चीज रिडिकुलस नहीं थी, उसके पीछे का सीक्रेट मैसेज मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी भी चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, और वो स्ट्रगल जब अपनी लिमिट क्रॉस कर जाएगी ना, आपको मतलब सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नहाते, उस चीज का एक नशा आपके दिमाग में जब चढ़ जाएगा, आई थिंक वही ग्रेटनेस की शुरुआत है। Definitely. That तो that जो लोग ये passion बोलते has हैं to ना कि come. हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा कुछ हो नहीं रहा, एक्चुअली उनकी मेहनत की डेफिनेशन गलत। लाइक फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर साहब 18 से 20 घंटे काम करते हैं आज भी। इनका खुद का Right. हॉस्पिटल है, राइट? इनके अंडर डॉक्टर्स है, मल्टी स्पेशली हॉस्पिटल है। हम बैठते हैं, कई बार बात होती है तो मैं ये बोलता हूँ, सर आपको क्या जरूरत है जाने की? तो ग्रेटनेस कहां शुरू होती है कि एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने के बाद में ये इंसान ले बैक करके बैठ सकते थे, बट ही Right. डिसाइडेड टू कीप गोइंग अहेड।
Exactly. सो आई थिंक वो एक किक पॉइंट अगर आपकी लाइफ में है, वो ढूंढने की कोशिश करो कि क्या आप उस लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हो। बॉस, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपकी स्ट्रगल उस लेवल की है ना, आपका पेन अगर उस Right. लेवल का है, तो आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। Right. We can agree on this that struggle, everybody struggles, but people have to be persistent with their struggles in order to achieve something. Because a struggle for a day and then leaving it off, it doesn't make any sense. The struggle has to be consistent, persistent, so that वो एक दिन जाके किसी greater height पे achieve हो Like सके. for example, take it to yourself. You are expecting a lot from your organization today. You are unhappy at your workplace. आपके अंदर की बात बताता हूँ, आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो, आप अपनी कंपनी से खुश नहीं हो, आपकी डिमांड्स ज्यादा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, बट एक्चुअली आपका जो किक पॉइंट है ना, वो उतना है ही नहीं। तो आप जो भी Right, डिमांड कर रहे हो ना, वो गलत है। आप पहले उस लेवल के ऊपर जाओ, और फिर आपका जो right, हक है ना, वो छीनना पड़े तो छीन लो। right, तो ये आपकी लाइफ में भी चल रहा है। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन योर लाइफ नाउ। यू आर नॉट right. हैप्पी We can वेयर agree यू on आर this. सिटिंग टुडे, व्हाट यू आर डूइंग। आप पूछ लेना चाहे अपने Right, बॉस से, आप खुद से पूछना, मेरे से मत पूछना। right. तो वो जो Definitely, sir. स्ट्रगल है ना, वो आपके फेस पे दिख नहीं रही। आप जबरदस्ती बैठे हुए हो एक ले बैक एटीट्यूड के अंदर, कि ठीक है यार, एक इंटरव्यू है, मेरे को करना है यार। यू आर नॉट एंजॉयिंग, योर आईज आर टेलिंग इट। We have another question from our viewer. Yeah, Shruti says again, sir, I'm now a fan of yours because your words are truly inspirational. थैंक यू वेरी So मच। I think even I found the same that you, although you have done a lot of research, you have learned a lot of things although along the way. And one more person has asked the question, what do you think makes a good story? अ गुड स्ट्रगल मेक्स अ बेटर स्टोरी। Right. I think जिस it's a कहानी में one-liner, पेन but नहीं है, जिस still, कहानी में स्ट्रगल नहीं है, जिस कहानी के अंदर इंसान की लाइफ में किक नहीं है, दैट डजंट इंस्पायर मी। right, right. So I think we can agree on that, saying that, yeah, viewer says super, sir. Right. So I think we'll have to wind up this because again, we don't want the meeting to end abruptly. And yeah, the person who had asked the question, he says, "Mera tab nahi hai, sir." Yeah. So I think it was a great evening getting to know the writer of the book as well as the person whom this book is written. Both of you have shared a lot of things which would have inspired most of the people here to correlate with various stages at their life. Even for me, there were a lot of points which were connecting at various stages where struggle, dedication, all these things are not just one day's thing that you struggle for a day and then you say, ah, मैंने struggle कर लिया. Every day is a struggle until or even after you have an achievement. That I think was a very great point that you have mentioned, sir. Because yeah, Mahatma Gandhi could have stopped struggling when he said, he was very old when he was struggling to get India independence. He could have not cared. There were very young people doing so many other things. But until the last day, he struggled. He went on Dandi March, he went on Satyagraha, all those things. But he never had to. He still did. So that is how people become great. I found the meaning of this sentence that you told, that struggle has to be done even after having an achievement. I think that was a very great line from your answer. I think Ye, there is another do we have question. more time? 1 2 minute. I think one more question is there for Romers. One question is there. Yeah, yeah, sir. That's what I What was was one of the checking. most surprising things you learned in creating your books? Surprising things. I think the journey of those people when I start exploring, like जैसे चाहे डॉक्टर साहब की स्टोरी हो या मैं कोई फिक्शन लिखता हूँ या रियलिटी है, जब मैं उसकी रिसर्च के Right, अंदर लगता हूँ तो उसके अंदर जो लेयर्स अनफोल्ड होती है ना, वो सबसे सरप्राइजिंग चीज right, होती है। जैसे डॉक्टर साहब को बार बार right. पूछना पड़ता है, बताओ बताओ बताओ, ये नहीं बताते, थोड़ा कम बताते हैं, Yeah, फिर वही चीज इनके फादर से घुमा के निकलवानी पड़ती है। तो आई थिंक वो जो right, एक पैटर्न है ना,
एक स्पाई पैटर्न बोलता हूं मैं इसको, एज एन ऑथर आई प्रिफर टू गो ऑन ए स्पाई मोड। और वो जर्नी Right, मेरे को right, right. फैसिनेट करती है, अलग अलग लोगों से मिलना, उनको रीड करना, उनके बिहेवियर को रीड करना, दैट व्हाट इट इज। नो मोर Right. क्वेश्चंस आई थिंक, और होस्ट इज टायर्ड राइट नाउ एंड वी हैव ऑलमोस्ट read 1 hour. Nothing like that, sir. I am not tired at all. No, 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 I no. would have loved Your time actually to is up. have Your another time is hour up. of, yeah, You the are on time is the payroll. Your time constraint is here. up. The time is the constraint here. Otherwise, I would have loved to have another hour with you discussing about many other things. No, 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 no. I'm But just kidding. So, anyways, it's right, really indeed a pleasure joining all of you. बहुत प्यारे प्यारे questions थे, हमारे host बहुत अच्छे थे. And definitely, मैं conclude करता हूँ आपकी जगह, ना? तो आपने आज definitely, sir. बात करी एक ऐसे गॉड से जिसके पास जान बचाने की कला है, और आपने आज बात करी एक ऐसे गॉड से जो क्रिएटर है। दूसरे गॉड से. तो आप दो भगवानों से रूबरू हुए, तो आप लोग बहुत Definitely. खुशकिस्मत है जो इस लाइव के अंदर आए। और अब अपना प्यार इस बुक को दें। भगवान खुद आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस किताब को पढ़ें, अपने रिव्यूज दें हमारे सोशल मीडिया पे आके, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे आके। आई Right, थिंक right. दैट्स ऑल So, द our कंक्लूडिंग viewers are स्टेटमेंट। wishing best of luck for both Mr. Lom sir and Dr. Sunil sir. So, as you yourself said, your struggle will not end today. Both of you have to struggle until you feel like, you know, your struggle is. I don't think there will be a feeling of I have enough, I've struggled enough, but because every day that thirst comes to struggle more and more to, you know, एक और स्टेप आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, एक और ऊपर बढ़ जाते हैं. So I think it was a great experience to have both of you with us interacting. So I guess we can conclude this launch today, and we can have our एब्सोल्युटली। viewers. Yeah, we can have the viewers given the links for the purchasing of this book. If people are interested, they can go through all the platforms where this book is available. And yeah, we had a great evening, Mr. Lone sir and Dr. Sunil sir. Thank you for joining us for this wonderful event. I Thank think you. a man with white coat will achieve great heights because the struggle is also so much. So yeah, I think we can conclude the meeting for today. Thank you very थैंक यू much. एवरीवन। Thank you, Long, for writing a nice थैंक book. यू सर। Right. ओके सर, बाय। Okay. Thank you so much, everyone, for joining us. We'll see you at our next book launch. Thank you.